श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीकृष्णद्वादश नाम स्तोत्रम्। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा। किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन, तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा।
किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्यात् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पंचमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्यात् द्वादशं श्रीधरं तथा किं ते नाम सहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन
तानि नामानि विज्ञाय नरः पापै प्रमुच्यते। प्रथमं तु हरिं विन्द्यात्, द्वितीयं केशवं तथा, तृतीयं पद्मनाभं च, चतुर्थं वामनं स्मरेत्। पंचमं वेदगर्भं तु, षष्ठं च मधुसूदनं, सप्तमं वासुदेवं च, वराहं चाष्टमं तथा, नवमं पुण्डरीकाक्षं, दशमं तु जनार्दनं, कृष्णमेकादशं विन्द्यात्, द्वादशं श्रीधरं तथा।